Assalamualaikum ji. Thank you for tuning into the Environmental. We are back with another episode. Dawar is back. I am back. And today we have as our guest Mr. Zulfiqar Ahmed. He's an innovator and entrepreneur. पिछले 25 साल का इनका एक्सपीरियंस है और मेन इनका काम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और माहौलियाती जो इश्यूज हैं या माहौलियाती जो फील्ड है उसके अंदर है, जिसमें he tries to solve the problems using latest technology. He's the CEO of Innovation Labs, mainly based in Faisalabad, but of course, like also all over Pakistan or UK में भी इनका बहुत ज़्यादा काम है. Main energy, environment, water और air quality के ऊपर इनका काम चल रहा होता है. So rest, of course, we will ask Mr. Zulfiqar Ahmed कि क्या इन्होंने पिछले 25 सालों में इनोवेशंस की हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम लोग जो एनवायरमेंटल इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं. अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान कितना पीछे है दुनिया से इनोवेशन में, लाइक टेक्नोलॉजिकल जो सॉल्यूशंस हैं एनवायरनमेंट के उसमें. तो विल गो फ्रॉम देयर. जुल्फिकार अहमद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र. आप लोग सुनाइए कैसे हैं? एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. Oh, absolutely. I hope the air quality in UK is at least a bit better than Karachi and Lahore at this point in time. ये AQI is around 20 के आसपास है आज. कान को हमारी कितनी, मैंने डाला था हमारी जन्नत की हवा प्लेन ना एग्जैक्टली. मेरे ख्याल से लाहौर तो 300 क्रॉस किया हुआ है, कराची भी ऐसी 200 250 के पास है अभी. बिल्कुल. Actually it was day before yesterday was 35, but because of sure go ahead. 35 बहुत ज्यादा हाई थी. 35 was high because लेकिन वो क्रिसमस और बॉक्सिंग डे है तो वहाँ पे तो what I ट्रेनें वगैरह भी बंद थी कल. ट्रैफिक ऑन द रोड इट 420. वो तो मैंने ये सुना है कि a lot of the winter emissions in Europe, particularly UK maybe, is because people burn wood in their fireplaces. वरना अगर वो wood burning बंद हो जाए तो मेरे ख्याल से throughout the winter season, especially holiday season में, तो AQI would not be more than 10. इतना कम हो जाए. वुड बर्निंग जो है वो एक्चुअली ना लंदन में या मेन सिटीज में तो नहीं होती. वो रिमोट एरियाज में हो सकती है जहाँ पे द गैस सप्लाई इज नॉट कनेक्टेड थ्रू द पाइपलाइंस. तो वहाँ पे लोग करते हैं, वहाँ पे ऑयल यूज होता है एज ए हीटिंग के लिए. लेकिन 1952 का जो क्लीन एयर एक्ट था दैट प्रोहिबिट्स बर्निंग ऑफ वुड इन लंदन. सो यू कांट डू दैट. यू कैन डू बारबेक्यू बट that's about it. Nothing more than that. And people will object to your barbecue as well. As we know, barbecue also causes smog. Yes. कराची तो पूरी हेडलाइन चली थी कि जो मेन इश्यूज है बारबेक्यू की वजह से. जी. So I think अपने काम के बारे में बताइएगा. Hani, that's actually a good point to start the discussion. Since we have touched upon the subject of Clean Air Act and how different policies were put in place to reduce air pollution in London, given the whole 1952 smog episode as well. So you've been working in this field, I believe, for the last 20-25 years. Initially, where did you begin? What was the initial motivation to get into this field, environmental tech or green tech? And right now, what are the key subject areas that you deal with? Well, I've been working in energy sector for the last almost 20 years now in UK. When I say UK, normally European market is the same thing. So whatever happened in the UK energy sector is replicated in the whole Europe as well. What we see, if you look at the 2010, the energy production in Europe, and now it's 2022. If you look at the production levels, the energy production levels are the same. They haven't increased their new energy resources or energy sources. What happened is, using energy efficiency, they managed to cut down their energy consumption by up to 20%. So if in 2010, let's say if we needed 30,000 megawatt of electricity per hour, 2022 now we need the same energy. Unlike Pakistan, where we say energy production or energy demand is linked to the GDP growth. So if we have 4-5% GDP growth every year, the energy demand is increased. But that energy demand can be cut down by having energy efficiency, energy conservation method, which we very lack. So when I moved to Pakistan in 2016,
we look at the areas, like what areas we can work in, and we found out that energy, the air quality, the emissions, whether it's urban emission, whether agriculture emissions, if we can develop technology based on those sectors, we can do a lot of good stuff. We can help industry in Pakistan, we can help the public sector, we can help the public in generally, and we can help the agriculture sector. So ये idea था behind that. Second ये था कि एनर्जी मॉनिटरिंग की अगर आप बात कर लें एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोस्ट ऑफ द सेंसर्स वी इंपोर्ट फ्रॉम अब्रॉड, वेदर वो लो कॉस्ट सेंसर थे या इवन स्टैक एमिशन मॉनिटर्स थे. रेगुलेटरी बॉडी जो है, दे हैड अ डिफरेंट, बिकॉज दे हैड अ डिफरेंट स्टैंडर्ड टू फॉलो. बैम है, ट्वैम है, उसमें डिफरेंट है. सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट टू मेक अ क्लियर पिक्चर, फॉर एग्जांपल इन लाहौर, if you have a regulatory body, one station most of the time is out of order, and if you put like 8-10 monitors in Lahore, you can't really measure the air quality or the impact of the air quality or the air pollution in Lahore. So we the first thing we did was we started building this locally air quality monitors, and interestingly we got a client in a telecom operator in Qatar who became our first buyer. And Interloop, I think I can mention, when we, a couple of years ago, they wanted to install some air quality monitors in Faisalabad, and I would put up on the tweet, so Musaddiq Sahab from Interloop, he helped us install some sensors in Faisalabad. So we got the whole year's data down there, and it presents a very bleak sort of situation of air quality in Lahore, in Faisalabad. Lahore, we see loads of sensors. Karachi, the situation is always more or less the same. The first thing, as we used to say, like, like we are a diagnostic lab. In order for you or people to, or the doctors to heal or give some medicine, you need to have the lab reports first. You need to identify what the problem is, what the causes are. If you don't know the causes, or if you don't know the level of causes, you can't really start treating anything like that. So we came as let's say lab service provider, and then you have Dawa, and you have other people, the one who come on to the public policy level, because we can do diagnostic. By policy has to be implemented or built or designed on based on those data. What you need to do, how you need to reroute the traffic, how do you need to manage the industry, how do you need to monitor the burning of the crops. So these are all come on a second phase. But to do that, you need lots of data. So that was one of the reasons we came into this sector. So yeah, and I think you're also one of the unique organizations because Pakistan में इस पे इतना काम नहीं हुआ. तो उस sense में, if someone has to set up a organization like this and develop technology, जिसमें आपने mention किया, Pakistan usually imports a lot of these sensors, and no one is manufacturing them locally, but you've been able to manufacture them and also export them to Qatar and other places. So what are the sort of roadblocks that you faced, or the policy sort of areas that you had to navigate to get to that point कि हम यहाँ सेंसर बनाएंगे भी और फिर सेंसर एक्सपोर्ट भी करेंगे, और अभी भी इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हमें करने की ज़रूरत है? Well, we operate in IoT sector. I believe there are maybe a dozen or so other companies are small to medium size operating in this area. We are not considered as a manufacturer. Unlike a textile or shoe making, we're not going to make 2 million meters of fabric, or we're not going to make 10,000 pair of shoes. When we start working with different clients, what happened that we need to build prototypes. We need to build 1 or 2 prototypes and send it to them for them to validate it. This is where the trouble starts. In the minute you build a sensor as a prototype, you have the membership of the local chamber, you are registered with NTN, you are registered with FBR. The minute your device is taken to the airport, suddenly it's considered as, I wouldn't usually call the word bomb, but somehow it's a very dangerous thing that the custom and the ANF, they must need to dismantle the whole thing to open it up to see what's going on inside. A lot of devices from what we build for our customers and few other IoT companies I personally know. This is the trouble they're having, that it's like, we don't manufacture. So if we had 1,000 devices going under some XYZ name, it's fine to export. But to work as a prototype designer, imagine if we are working few
on few products at the moment with a Canadian company, and they sent us a hardware, and the hardware was stuck with the immigration, with the customs. They don't want to release it to us, and we're going to work on that and send it back to Canada. And I know we're going to have the same trouble as well. So this is sort of like electronics manufacturing and prototyping, because we're not as an industry, and we are. I won't say we are considered as a criminal, but that's how we feel like we are being treated. So you want to do something innovation, you want to bring some local build solutions, but the ecosystem is not there. The support is not there. I mean, we're not expecting some financial support. We're not expecting some cheap electricity or gas rate. What we say, like, at least let us send our devices as a prototype out without having to go through with so much hassle. इसके अंदर what I wanted to understand is, I think I've also multiple times I've read about these issues. Sometimes it was because of your tweets as well. Is it a standard issue that other industries also face in Pakistan? For example, someone who develops a leather product and tries to export it. In certain cases, when animal leather is exported out of the country, it needs to go through certain ministries and approvals, because leather is especially if it's bovine leather, animal products need to get their certification. Is it that sort of issue that a certification mechanism does not exist, so that's what's happening, or it's just related to digital devices? That's something related to digital devices or radios, something that gives out a frequency or records data. Is it that sort of issue that for some reason they're afraid of? No, not really. I mean, see, like, if you can buy any electronics in Pakistan from the market, from Daraz, wherever, ship it abroad, that goes fine, no worries. But if you build one in your house or in your lab, okay, there are certain standards. For example, there are CE standard for for health-related safety and stuff like that. But they only come at a later stage, once you are in a manufacturing process, or when you are in a manufacturing stage, but not when you are doing one prototype for $500. You're not going to spend $5,000 to get CE done for that one, or Roche, or some hazard material testing for that. That is not considered. That's not a requirement. I mean, most of the European country, I mean, I can only relate to my experience down here. I can ship anything. I can build in my house. I can ship anything outside, as long as when you say health and safety, there's no hazardous material. Like, I can't ship the batteries outside. There are certain chemicals that I cannot ship them outside. But to buy some basic resistors and capacitors and microcontroller from a market, put them on a PCB and try to send them outside, suddenly become hazardous, because they don't understand it. And there's no safety or a conformity or declaration certificate that tell us, okay, if you need to fill this certificate up, that's fine, you're good to go with it. But there's none. Ismail, like, I wanted to ask, because you mentioned they don't understand it, and because of that, there's several hurdles, even in just the prototype stage. So do you think that's the issue overall in the environmental sector? Like, do people not understand climate science at this point in time, or is this like just a general issue that people don't understand tech? Like, do they not understand specifically climate tech, or is it just like about technology throughout? No, I think it's across the border. I want to add to this question. For example, someone builds a camera. They develop a lens, and they develop a recording device, and they build a camera inside there, and they try to export. Will it have the same issue, or is it certain sensors that they have an issue with? No, it's the same issue. They will have the same issue. Because the authorities that will check your devices, they absolutely have no clue. They will just tell you to open up the device, unscrew it, show us what's inside. They will try to remove the parts if they can. So across the border, as I said, everything you build, everything is a suspicious product. इसका मुझे मेरे दिमाग में कभी एग्जांपल आ रही है। मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, थाईलैंड गया हुआ था, और मैं यहाँ पाकिस्तान से ना एक ड्रोन खरीदा था, छोटा सा ड्रोन था, वो मैं ले गया, लेकिन मुझे जाते हुए किसी ने कुछ नहीं कहा। वापस आके कस्टम्स ANF ने पकड़ लिया, जी आप ड्रोन क्यों लेकर आ रही हैं? तो वो कैमरा वीडियो रिकॉर्ड करने वाला ड्रोन है, ये तो हर बंदा की टूरिज्म करने जाता है वो रखता है आजकल, इसमें क्या है? तो वो मुझे कभी कभार यही लगता है कि हमारे यहाँ
जो एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी वो हुआ ही नहीं है उस लेवल पे, मे बी स्कूल्स में नहीं हुआ, या ट्रेनिंग जो होती है एज ए लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर जो आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें भी एक हद से ज़्यादा वो आज तक ट्रेनिंग ही नहीं मिली हुई, तो दे डोंट नो कि दीज थिंग्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड नाउ। तो वो एक आई थिंक मे बी जनरल लिटरेसी प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट्स। इसके अलावा मैं अब ये चेक पूछना चाह रहा था कि यू हैव बिल्ड डिवाइसेस व्हिच आल्सो वर्क अलोंग विद पब्लिक सेक्टर रेगुलेटर्स लाइक ईपीडी। तो एक तो हमारे यहाँ आई थिंक एक काफ़ी अरसे से इशू है कि हम एयर क्वालिटी मेजरमेंट्स को अभी तक एट द रेगुलेटर लेवल उन्हें देते हैं तो वो मानते नहीं हैं, लेकिन उनके पास वो खुद भी डिवाइसेस नहीं हैं या वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं करते उस डिवाइस का डेटा जो उनके पास है। तो इज दिस अ रोड ब्लॉक दैट यू थिंक के हमारे यहाँ वो डिनायल है फ्रॉम द रेगुलेटर इटसेल्फ that is also impacting the industry? For example, अगर regulator EPD या EPA किसी भी province का agree कर ले कि these devices work and we want to use them, तो maybe at the government level भी policy starts changing that they're more open to technology. तो एक ये भी हो सकता है मेरे ख्याल से कि हमारे यहाँ वो eagerness to adopt technology नहीं आ रही और हम वही पुराने घिसे पिटे 30 साल 50 साल पहले जो पॉलिसी बनी थी उसको ही लेके चलाई जा रहे हैं। देखिए इसमें ना सर्टन फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टम इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि जो ईपीडी है वो रेगुलर एमिशंस भी वही पकड़ेगी, इंडस्ट्री के एमिशन भी उसने पकड़ने हैं, पॉलिसी पता नहीं किसने बनानी है, बट द थिंग्स डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आ जाएं तो जो ईपीडी का जो रोल है, जैसे लंदन की मैं एग्जांपल देता हूँ, लंदन में ईपीडी है, उनके पास 44 लगे हुए रेगुलेटरी स्टेशन लगे हुए हैं, सिमिलर टू व्हाट वी हैव इन ईपीडी इन पाकिस्तान। वही बैम टेक्नोलॉजी है, वो हरीबा के मेट1 के बड़े बड़े स्टेशन, कॉस्ट लाइक फॉर्च्यून टू बिल्ड वन। तो अपार्ट फ्रॉम दोज 44 जो रेगुलेटरी स्टेशन है, हमारे पास 28 कॉर्पोरेशन है लंदन के अंदर। ईच कॉर्पोरेशन के अंदर एटलीस्ट 400 से 500 लो कॉस्ट सेंसर लगे हुए हैं। वो जो लो कॉस्ट सेंसर लोकल कॉर्पोरेशन ने लगाए हुए हैं उनका कोई तल्लक नहीं है ईपीडी के साथ। लोकल कॉर्पोरेशन की जो पॉलिसीज जो बनती हैं वो ट्रैफिक की या एमिशंस की, वो अपनी बढ़ रही है तो ट्राई का यहाँ से ट्रैफिक का फ्लो चेंज कर दिया जाए, अगर वहाँ पे वन वे इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाए, वहाँ पे डीजल गाड़ियों का दाखिला मना कर दी जाए, तो ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो स्टेप लेती है। और ईपीडी जो हमारा भी है या ईपीए हमारा, इट्स एब्सोल्युटली उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इसके अंदर। इस तरह जब आप पाकिस्तान में देखते हैं कि ईपीडी का एक्शन शुरू हो गया जी, वो धुआं मारने वाली गाड़ियों को हम पकड़ के उनका वी आर गोइंग टू डू फाइन्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अगेन in most countries of the world, EPDs, this is not EPD's mandate to start checking the kid. This is ये जो एरिया है ये ट्रैफिक पुलिस का एरिया होता है। एवरी ईयर आप गाड़ियों का एक तो टेस्ट करवाते हो जिसके अंदर एमिशन टेस्टिंग जो है वो कंपलसरी है। इफ योर कार फेल टू पास दैट टेस्ट यू कैन नॉट ब्रिंग दैट कार ऑन द रोड। और जनरली भी क्या होता है कि ट्रैफिक पुलिस जैसा हमारे नाके लगा के तो वो गाड़ियों के वो एक्साइज और टैक्स के टोकन वगैरह चेक कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो एमिशन टेस्ट करते हैं। बट अगेन EPD is not involved in that. That's purely local government and the traffic police जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। अब मसला ये होता है कि हमारे यहाँ फर्ज करें लंदन के अंदर आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, आपने कोई स्कूल किसी जगह पे खोलना है, कॉलेज खोलना है, तो उसके अंदर जो वेरियस जो पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो आपके जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, उसके अलावा एनवायरमेंटल का डिपार्टमेंट है, हेल्थ का डिपार्टमेंट है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ती है। तो होता क्या है कि वो सभी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इसके अंदर, वो उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जिस तरह आप लोग करते हैं यहाँ पे, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास लॉ हमने ये बना दिया है पाकिस्तान में कि फॉर एग्जांपल 3 जो एरियाज हैं, हमारा हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो कोर्ट्स हैं जिसमें सेशन डिस्ट्रिक्ट और जिस तरह कोर्स हैं, और जो स्कूल्स हैं एकेडमिक जो हैं, दे सपोज्ड टू बी इन द सेफ जोन। ये तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन है इसके ऊपर। सेफ जोन का मतलब ये है कि दे मस्ट बी एटलीस्ट 300 मीटर अवे फ्रॉम 300 फीट अवे फ्रॉम द मेन रोड। हाउ मेनी स्कूल्स or hospital do you see they are 300 feet away from the main road? In my Faisalabad city probably जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, अलाइड हॉस्पिटल है, सिविल है या हार्ट के हैं, they are away from the road because they have big parks before you actually get to the building.
लेकिन बाकी जो स्कूल्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, दे आर राइट ऑन द मेन रोड। तो जो ट्रैफिक पोल्यूशन रोड पे पब्लिक एरिया, एग्जैक्टली पेशेंट जो है जब वो आप हॉस्पिटल में लेके आते हो, दे आर एक्सपोज्ड मोर, क्योंकि वो उन्होंने रहना है वहाँ पे 3-4 दिन, सो दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू दैट थिंग। चलो रोड वाले ने तो कुछ 2-4 घंटे बाद दे गॉन टू देयर होम इन अ डिफरेंट एरिया, तो उस बंदे को आपने वहाँ पे स्टक किया हुआ है। और लॉज जो है वो इतने लीनियंट्स हैं, एनवायरनमेंट वालों की नजर ही नहीं पड़ती। एनवायरनमेंट विल सी कि वो धुआं नजर आ गया मुझे फैक्ट्रियों के अंदर, वो धुआं नजर आ गया भट्टों के अंदर, लेट्स टर्न इट टू जिगजैग, उनको ये नजर नहीं आएगा। Another example I gave it to you in agriculture sector में रिसेंटली हमने कुछ सोल्यूशन डेवलप किए हैं। उसमें हमारे साथ एक स्विस एनजीओ है, साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा थी, जिसका हमने एक प्रोजेक्ट किया अभी। अगर आप राइस के बारे में बात करें, कैन वी टॉक अबाउट एयर emissions in rice agriculture now? Yeah, okay. राइस जो है, राइस इज वन ऑफ द मोस्ट pollutant kind of crop हम लोग कहते हैं। It emits the most emissions. To produce 1 kilogram of rice, you need 4 to 5,000 liters of water. तो एक तो ये वाटर इंटेंसिव है एक्सट्रीमली। हम पाकिस्तान में जो वैसे भी जो 5 कंट्री दुनिया में है जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी, हम जा रहे हैं एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी की तरफ। पाकिस्तान नंबर 2 पे है ग्लोबली। हमारे वाटर जो रिसोर्स हैं, अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर डिप्लीट हो रहा है बड़े स्पीड के साथ। फिर आप जब 1 किलोग्राम राइस को ग्रो करते हैं, हमारी ट्रेडिशनली चूंकि होती है फ्लड इरिगेशन होती है, हम लोग करते हैं, उसकी वजह से वो मीथेन गैस भी प्रोड्यूस होती है जब वहाँ पे वो रिएक्शन चालू होता है पानी का। तो फॉर एवरी 1 किलोग्राम राइस यू प्रोड्यूस, यू आल्सो प्रोड्यूस 180 ग्राम ऑफ मीथेन। अब जो मीथेन गैस इज अबाउट 30 times more potent, some people say more, but let's say 30 times more potent than CO2। तो अगर हम इसको इक्विवेलेंट करें CO2 के अंदर, दैट मींस टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ राइस you are producing around 2.8 kilogram of CO2. And in Pakistan, we proudly say we produce 7 million ton of rice last year. Multiply it with CO2 emission and see how much emissions we are also producing. But then we completely shut our eyes because these are not on radar. Our radar is industry. Emission हम इंडस्ट्री का देखेंगे, emissions हम लोग सिर्फ भट्टों के और गाड़ियों के देखेंगे। एग्रीकल्चर, अच्छा जब emissions की बात आती है, इट्स नॉट अबाउट कि जब आप एमिशन रिड्यूस करेंगे तो कोई सोसाइटी का फायदा हो जाएगा, पीपल विल लिव, यू नो, दे हैव अ हैप्पी लाइफ और हेल्दी लाइफ। ओके, दैट्स वन एस्पेक्ट। अच्छा, फाइनेंशियल जो प्रोडक्टिविटी है या फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, दे आर ऑलवेज लिंक्ड विद कंजर्विंग वाटर, एनर्जी, कोई भी चीज आप कर रहे हो। सो जिस तरह हम टेक्नोलॉजी को बात करते हैं, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी तो वही थी जो हम 1760s देखते आ रहे हैं जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हुए। फिर 19th सेंचुरी में आगे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लिया आके। उस वक्त तो हमने बेदरेग इस्तेमाल किया रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्स का, उसमें पानी था, कोल था, जो भी हमारे पास था। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी। तो बैक टू जो राइस का मैं बता रहा था, 20 years ago in International Rice Research Institute in Philippines, they developed this method of smart irrigation called alternate wetting and dry method. Just using a 1 फुट का वो प्लास्टिक का 4 इंच का पाइप है, उसको परफोरेट करके आप जमीन में लगा देते हो। एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग द फ्लड इरिगेशन के जब जमीन में नजर आ गई कि ड्राई हो गई है, यू जस्ट पुट कोई उसके अंदर कोई स्केल डाल के देखते हो कि पानी अंदर है कि नहीं। नाउ यूजिंग दैट प्रैक्टिस, फार्मर्स कुड सेव अप टू 30% ऑन देयर वाटर रिक्वायरमेंट। 15 से 20% एनर्जी उससे बच जाती है, जो अगर आप ट्यूबवेल और इलेक्ट्रिक या डीजल पंप से अगर इरिगेट कर रहे हो। And also around 48% of emissions जो मीथेन के हैं, they are cut down। तो वो फर्स्ट टाइम तो पाइप्स आए थे about a year ago, and these organizations came to us कि आप इसके ऊपर हमें कोई IoT enabled solution लगा के दें। तो हमने 2 डिवाइसेस बनाई थी। वो एक ये पिछला जो सीजन लगा राइस का, इसमें किया है, the results were phenomenal। तो उसके बाद they placed an order to build 200 devices also as a pilot project। तो अभी हम जा रहे हैं, वो बना रहे हैं। तो बाय एंड ऑफ February we'll deliver them, actually we'll install them in Gujarat region as well। तो based upon those kind of जो devices होगी, we can hugely cut down our emissions, conserve water and save energy। So there are lots of hidden areas when you talk about emissions and air quality. It's not just the big cities, it's the other sectors, you know, you can improve a lot।
I think similarly, livestock is a big area. Pakistan में बहुत completely ignore होता है because we have a very big livestock population and the emissions from methane are completely ignored. Uh, इसका तो I was also reading that in the international market, the sustainability sector has evolved so much that they want to minimize the impact of the methane, either try to give them a feed that reduces methane emissions, cattle ko, yeah, they have developed separate facilities that wherever the cattle is kept, if they're emitting methane, they try to capture the methane. They, of course, methane has uses. Pakistan, for example, has a gas shortage right now. It can easily use biogas or methane emissions from landfills or livestock if it's managed in a controlled manner and also captured in a controlled manner. This is something अब हमने बात की clean air में, लेकिन sustainability sector general पे what are your views on Pakistan's energy sector? How can we ensure that energy sector is more sustainability compliant? काफ़ी बड़ा इशू हमारा ये है कि जिस आपने कहा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर पे फोकस नहीं है, उस दिन पावर सेक्टर पे फोकस नहीं आता. तो जो फैसलाबाद देख लें, लाहौर देख लें, कराची देख लें, इसमें पावर सेक्टर के बेतहाशा फैसिलिटीज़ बनी हुई, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता कि कौन सा एक पर्टिकुलर पावर प्लांट क्या एमिट कर रहा है. कभी उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, डेटा नहीं हुआ. तो इस सेंस में what can we develop, what can we do to measure those emissions? देखिए उसमें couple of things है. If you go back 15-20 years ago, जब ये एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन फुटप्रिंटिंग की बातें आना शुरू हो गई, कुछ कंट्रीज ने इसके ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की. तो ये था कि जैसे जैसे आप वो, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास नॉर्मल लाइट बल्ब होते थे जो 60 वाट के, 100 वाट के, उसके बाद हम वो चले गए आगे टुवर्ड्स एलईडी और एनर्जी सेवर लैंप्स की तरफ आ गए. तो अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी जो बिहेवियरल चेंज थी जो मोस्टली कंट्रीज ने अडॉप्ट की, अलॉन्ग विद दैट हमने वो नहीं लेके आए. हमने क्या किया कि हमने अपने कमरे में वो एक जो 100 वाट का बल्ब था उसकी जगह हमने कहा जी हम ये 5 वाट की एलईडीज आ गई हैं, बड़ी एनर्जी एफिशिएंट हैं, वो हमने 20-25 लगा दी हैं, उसको हम ऑन एंड वो लीव देम ऑन विदाउट थिंकिंग कि यार ये एक्चुअली जो टोटल एलईडीज हैं ये तो 120 वाट की लगी हुई हैं. तो हुआ क्या कि हमने माइंडसेट हमने शिफ्ट नहीं किया, हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश की विद हाफ हार्टेड, विदाउट टेलिंग पीपल के यू नो दे वे डू यू गो विद इट. इसी तरह लॉज बताता हूँ आपको. यूरोपियन यूनियन में बैक इन द अर्ली 2000 उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किए कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका साल का इलेक्ट्रिसिटी का या गैस का बिल जो है वो 1 लाख पाउंड से ऊपर है, जो कि वैसे 1.5-2 करोड़ रुपया बनता है साल का, उनके ऊपर कंपल्सरी कर दिया कि भाई आपने हर साल एनर्जी एफिशिएंसी को ऑडिट करना है and you need to cut down your energy spend by at least 5%. If you don't, the government will impose penalty on you. And the ones who actually can achieve, वो जो penalty से पैसा इकट्ठा होता था, they will given to them as a reward. तो वो अपने characteristic वाली approach लेके आगे. अब UK alone there are 22,000 INC industrial and commercial customers जिनकी requirement ये होती है कि वो उनके बिजली का बिल लाख पाउंड से ऊपर है. So they are stuck with that, उन्होंने अपनी efficiency audit करने ही करने हैं. हमारे यहाँ IS तो 50001 आया हुआ है, कुछ इंडस्ट्रियां अभी अडॉप्ट कर रही हैं उसको, लेकिन वो वॉलंटरीली बेसिस के ऊपर है. अनलेस यू पुट अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑन द गवर्नमेंट, वो होना नहीं है. दूसरा ये है कि हम लोग अपने घरों में हम करते थे कार्बन फुटप्रिंटिंग की, वो कैलकुलेटर पड़े हुए हैं हमारे पास. बिजनेसेस में हम वॉलंटरीली बड़ा कुछ करते हैं. मसला ये है कि हमें ये नहीं समझ आया गया लोगों को अभी तक कि जो मैं बत्ती या AC या चीजें इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं बत्ती ज्यादा यूज कर रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली वो जो पावर स्टेशन से ज्यादा बत्ती मेरे लिए जो बन रही है ना, जिसमें से अब GHG एमिशन निकल रहे हैं, तो आई एम एक्चुअली इनडायरेक्टली टोटली इन्वॉल्व विद दैट. तो हम लोग जो अपना रखते हैं पूरा फोकस जो है वो पावर स्टेशन की तरफ, लेकिन बेसिकली एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर मैं भी कल्प्रिटली इन्वॉल्व हूँ उसके अंदर, क्योंकि पावर स्टेशन में बत्ती ज्यादा तब बनानी है जब उसके पास डिमांड ज्यादा होगी. सो वी आर नॉट, वो यहाँ पे होती है डिमांड साइड रिडक्शन पॉलिसी, DSR पॉलिसीज. वो कभी कभी नेपरा या किसी बंदों से बात होती है तो वो अभी हमारे डार पे आ ही नहीं है अभी तक. 20 साल हो गए हैं कि यार वो इस तरह की पॉलिसीज हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए कि नहीं. तो अच्छा, तो जुल्फिकार साहब, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बेसिकली लाइक आपका मानना है कि
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से पहले पॉलिसी आनी चाहिए, या ये आपको लगता है कि पैरेलल में हो सकता है कि, और जो है पाकिस्तान में, अच्छा पाकिस्तान में इस तरह की किस तरह की इनोवेशन है जो कि इस वक्त हो सकती है, या विद द करंट एडमिनिस्ट्रेशन आपको लगता है कि अब पॉलिसी की तरफ भी काम शुरू होगा? देखिए, फ्यू इयर्स गो पाकिस्तान में 2 इदारे बनाए गए, पीका था, पंजाब एनर्जी एनवायरनमेंट, और पंजाब एनर्जी कंजर्वेशन था, इस तरह नीका बना जो नेशनल लेवल का था। आइडिया क्या था, जिस तरह यूरोप में, वेस्ट में, वो हमने एनर्जी स्टार अप्लायंसेस रखी हुई हैं यार, ABCD है, कि अगर वो हम एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस बनाएंगे तो अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू अचीव मोर एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी की डिमांड हमारी जो कम हो जाएगी। अच्छा, लेकिन उनकी हाफ हार्टेडली, मेरा काफ़ी साल हो गए हैं, सवाए उनकी वेबसाइट पे 2-4 फैन मैन्युफैक्चर पंखों वालों को उन्होंने अपने पोर्टल पे लाने के अलावा कुछ नहीं ज़्यादा किया। जबकि यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पहले अप्लायंसेस थी, अब हमें घरों की भी करवानी पड़ती है अपनी एनर्जी, जैसा अप्लायंसेस का एनर्जी स्टार रेटिंग है ना, वो घर की करवानी पड़ती है। अगर आपने घर बेचना है, खरीदना है, रेंट पे देना है, तो वो सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है यार कि ये जो घर है ये कितना एनर्जी एफिशिएंट है। बट दिस इज ऑल, लेकिन ये एक तो है पॉलिसी, दूसरा ये है गवर्नमेंट रेगुलेशन। पहले पॉलिसी बनती है, पॉलिसी रिकमेंड हो जाती है गवर्नमेंट के पास, देन गवर्नमेंट मेक्स द लॉज ऑन बेस्ड ऑन दोस पॉलिसीज। तो उसके अलावा जो है ना, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। वॉलंटरी ऑप्शन जितना मर्जी आप कर लेना, बट अनटिल किसी पॉलिसी को उठा के आप उसको लॉज में इंप्लीमेंट नहीं करते, रेगुलेशन में इंप्लीमेंट नहीं करते, एंड दैट रेगुलेशन को फिर आप एनफोर्स भी करते हैं, उस हद तक कुछ नहीं होगा, वरना वॉलंटरी तो ये कुछ नहीं होना इसके ऊपर। अच्छा यार, मैं थोड़ा सा डिस्कशन का थोड़ा सा, आई थिंक we've talked about regulatory side, government policy side, and even how the business impact of not having the relevant policies or outlook impacts more innovation. Like, for example, uh, if you want to encourage local level development of products, I remember you also tried to create this air purifier, and uske andar bhi sensors ka kaam tha. And these are products that are going to have more demand in Pakistan now. So, what are the key steps or sort of key areas that, as an entrepreneur, particularly a tech entrepreneur, we need to have, or key areas in पे काम अगर किया जाए तो you'll have more of such organizations or businesses popping up? How can we encourage them? How can we make it more the market more friendly or incentivize कि इस तरह के लोग आएं और काम हो? Maybe information से ही people get more aware and start demanding new policies. So what is the best sort of recommendations from your side कि businesses क्या कर सकते हैं? Someone who is coming out of university, how can they get into this field? क्या क्या करना चाहिए? क्या education के अंदर additions होनी चाहिए? और which market do you think is the best area to get into right now for someone who is freshly graduating? एक किस्म का, what can you do with your skill as well? On a lighter note, पाकिस्तान में I observe one thing, we lack passion. कोई चीज़ हम करते हैं, जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, we do it with a very strong passion. That's the key to success. बाकी वो finances जो हैं, ये चीज़ें जो वो everything can be arranged, but passion you cannot ignite within someone. मैं कभी लोगों को मजाक में करता हूँ कि when I see young people, when they fall in love, whether boy or girl, 24/7, that's in their head, on the mobile phone, on the chat, everything. But when they come to the business, somehow they cannot even develop 10% of their passion. Okay, half-heartedly, वो incubation centers हमने बनाए हुए हैं, that you go down there with a pitch, you do 2-3 months of mentorship, and yes, we are ready to collect $1 million as a funding. It doesn't work like that, to be honest. What happened is, like in Europe, I can tell you there's a couple of great organizations. There's an organization called Carbon 13. It's in Europe. What they do, they have a program called Entrepreneur in Residence. So they already have themed, aligned, like what technology or what area they want things to be explored. तो उसमें आप लोग जा सकते हो कि मेरा पास ये idea है. They have the funding ready, but your innovation or your idea has to be aligned with their ideas. तो उसमें क्या होता है कि you work along with them. यहाँ पे क्या होता है कि I get up one morning and suddenly I have this idea, and 99% yes, we get this idea from other countries, YouTube, and that's fine. It's not replicating an idea from a different country. That's fine. We all do that at the same time. But in energy environment, it can work. For example, air purifier जो है, अगर आप फिर लॉस की चले जाएं,
every operation theater in the hospital around the world, including Pakistan ka jo law hai, you must have the air purifier installed in operation theater. I've been to few operation theater in Faisalabad. They have got no clue why air purifier is. Now आप ऑपरेशन के दौरान भी अगर एयर प्योरीफायर नहीं रख सकते, तो वो जो माइक्रो जर्म्स और जो माइक्रो क्या जो इस तरह की उल्टी सीधी चीजें जो पेशेंट को दे रहे हैं, बेचारे को ऑपरेशन करवाने गया है, वो ज्यादा बीमारियां लेकर हॉस्पिटल से वापस अपने घर में आ गया. तो मसला ये है कि आइडियाज तो बड़े हैं और सोल्यूशन भी बड़े लोकल हैं. कई कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो एयर प्योरीफायर्स बना रहे हैं. अच्छा, लेकिन हम जब भी बात करते हैं हम कहते हैं यार चाइना से सैमसंग का, पैनासोनिक का, ये ज़ूम का, आई डोंट नो, बड़े जबरदस्त हैं यार. थिंक अबाउट इट, व्हाट इज इनसाइड अ एयर प्योरीफायर? अ फैन एंड अ फिल्टर. there's no third sensor inside. You can put anything, fancy lights, fancy sensor, fancy bar, but why is it we cannot make that one? तो आइडिया तो ये है कि देखें, अगर आप शुरू में इसको बनाएंगे नहीं, we will never get to a stage के where we say यार एक तो हम इसको लोकल अडॉप्टेबिलिटी पे आ जाएंगे, इसके अंदर कॉस्ट भी कम हो जाएगी. दूसरा ये है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी बन जाएंगे. अनलेस वी कोई भी आइडिया हो हमारा, वो एनवायरमेंटल से रिलेटेड इनोवेशन हो हमारी, वो कॉर्पोरेट से हो, टेक्सटाइल से हो, जूते, कपड़े, लेदर, व्हाटएवर, अनलेस वी उसको हम इस तरह नहीं सोचेंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ना, वी आर नेवर गोइंग टू गेट एनीवेयर. तो ये एयर प्यूरीफायर ऐसे था, इट कैन बी डन वेरी नाइसली. लेकिन चूंकि हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, वी डोंट हैव मच फैसिलिटीज इवन टू बिल्ड अ पीसीबी इन पाकिस्तान, टू बिल्ड अ नाइस die, to build nice enclosures in Pakistan, because aesthetic sells as well. It's not just because we have the filters and the sensors, okay, let's just make some silly looking box and trying to sell it outside, because people do like aesthetic as well. We all do. तो यहाँ पे जी, sorry, speaking of innovation, or just speaking of जो आपने कहा कि passion to create something, अभी like I'm actually reading your tweet just now कि a petrol/diesel car has around 2,000 moving parts, while an electric car only has 18 moving parts. Or by not producing 1982 moving parts for each vehicle, tons of energy is saved when an electric car is produced. So you would imagine that Pakistan should somewhat try to leapfrog the what's it called, the vehicle industry and everything as well, automotive industry, and start creating electric vehicles over here as well. आपको लगता है कि जो आप जो बात कर रहे हैं कि उसके हिसाब से काम शुरू होगा? देखें, इसमें डिफरेंट थिंग्स कैन हैपन. फॉर एग्जांपल देखें, आप HEC है हमारे पास. HEC हैव गिवन सो फार 20 billion odd ऑफ फंडिंग एंड ग्रांट्स टू डिफरेंट स्कॉलर्स इन द यूनिवर्सिटीज. तो अगर कोई बंदा, आप HEC के ऊपर बैठे हैं या किसी गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल बैठे हैं, जस्ट पुट असाइड 1 billion rupees, get a team of 20 people, say look, we give you 2 years, build this one up. When we build our tanks, when we trying to build JF-17, we are good in doing that. We're a long-term 10 years policy. But building a small thing, 1-2 years policy, we somehow, I don't know, maybe we are unable to comprehend that thing. It doesn't need, we don't need billions of dollars of funding from outside. We don't need no ADB loans to do that. All we need is like one chunk of money. And we have plenty of people with excellent backgrounds in most universities in Pakistan. Set one group up down there in the manufacturing, say, look, we give you 2 years, come up with one single prototype of a basic electric cars. They are not going to make the batteries because we buy batteries from abroad. They are not going to start building no brushless DC motor because you can buy it. All they want is like just build one car that's roadworthy, or MVP, build MVP that is, that is actually we can drive, and then you can look into that, going into the scale or the manufacturing. But we're not even doing what we do. Like our students in Nest or some NED, they will build one small car 1 year. We will have a lot of videos on that. Then those boys get a decent jobs in abroad. They are left, and the car is in the university. We're showing it. Yeah, this is what built in 2019. Okay, so this is how the system, like, unfortunately works. And the poor collaboration between industry and academia is one of the reasons. That's a very important point that's been coming up. The poor collaboration between industry and academia. Like the last 2 or 3 talks that I've been to,
मेन जो कहते हैं यही बार बार शिकायतें को आ रही थी। मगर ये तो जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला जो काम है तो किया जा सकता है, तो मिलके करते हैं, पर किसी लेट्स थिंक अबाउट इट एनीवे। सो we're at 40 minutes, Davat, so perhaps we should look at one other question or a couple other questions and start moving towards the conclusion, and then of course inshallah we'll invite Zulfiqar Ahmed sahab once again later on, और जो कहते हैं या बहुत यानी environment में काम करने वाले लोग हैं और उनको जो कहते हैं प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए बात करने की, क्योंकि जुल्फिकार अहमद साहब जो बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और पर्टिनेंट बात है। I think from my side, one last question would be, because a lot of us who are concerned with the environment, they frequently go through this phase कि when you have information at your hand, for example, जुल्फिकार साहब ने सेंसर्स लगाए फैसलाबाद में या लाहौर में या फैक्ट्रियों में, he has information available, and of course he also realizes that situation is bad, that the levels of pollution are bad, and they're going to impact his health, his family's health. What do you do in that situation? कि पता है आपको कि situation bad है, लेकिन सिर्फ मुझे ही पता है और किसी ने कुछ नहीं करना, तो वो जो एंग्जाइटी होती है, ये इस काम में पढ़ने के बाद वो भी एक चीज़ होती है कि you have too much information available, and sometimes too much information means that you also know that what things are bad. So you have all this experience on how dealing with different agencies is very bad. For example, that experience, but experience of environmental indicators कि पानी की pollution बहुत बुरी है, एनर्जी हम इतनी वेस्ट कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन बहुत हाई है, तो इस एंग्जाइटी से फिर कैसे डील करते हैं, उसका क्या आपने तोड़ निकाला हुआ है? पहले जो आपने आई थॉट यू वर गोइंग टू आस्क मी अबाउट द पब्लिक साइड ऑफ थिंग। पहले तो आप ये काम करवाएं एक कि जिस तरह एवरी न्यूज़ के बाद हम देते हैं वेदर की सूरत हाल बताते हैं, आज बारिश होगी, आज टेम्परेचर ये होगा। एक्चुअली हाउ मेनी ऑफ अस आर रियली कंसर्न कि आज लाहौर में बारिश होगी, तो मैंने टीवी में देख लिया तो क्या करूंगा, क्या मैं छतरी निकालूंगा बाहर, अब क्या। अच्छा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, अगर आप देखें अल जजीरा को देख लें, BBC को देख लें, स्काई की न्यूज़ देख लें, आफ्टर द न्यूज़ दे डू शो वेदर। अच्छा, वेदर के बाद जो है वो एयर क्वालिटी की भी आती है रिपोर्ट कि लंदन के इन पार्ट्स के अंदर, इतना पार्ट के अंदर, उसमें क्या होता है कि वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट तो रीच है। अभी अगर आप किसी भी शहर में पोल करवा लेना, अब मैं कहता हूँ इन्वायरमेंट की हम ये बातें कर रहे हैं, आई वुड से कि 98% पीपल वुड नॉट हैव अ क्लू अबाउट एयर पोल्यूशन। दे वुड नो अबाउट स्मोक, दे नो अबाउट द चेस्ट डिजीजेस एंड द कफ, क्योंकि उनको हम कहते हैं यार अब ना मौसम चेंज हो रहा है, ये इसलिए आ रही है। वी कैन नॉट मेक देम अंडरस्टैंड कि यार ये पोल्यूशन की वजह से हो रही है, भाई पोल्यूशन है भाई इस वक्त, इसलिए हम कहते नहीं यार वो मौसम चेंज हो गया ना, देखो इस मौसम में बंदे बीमार होते हैं, यार मौसम नहीं है वो पोल्यूशन है। तो अगर पहली तो ये है कि लोगों को अवेयर करें। होता क्या है कि वेरी फ्यू ऑफ अस आर ओनली अवेयर। अच्छा, ये मैं आपको ब्रीफली इंटरप्ट करूंगा, सॉरी लेकिन अपॉलॉजिज, मगर ये हमने द एनवायरमेंटल पे अभी जो कहते हैं पिछले हफ्ते से करना शुरू कर दिया कि हम लोग वो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के वेदर का तो बताते हैं, साथ में एयर क्वालिटी का भी वो जो डाल दो। जी जी, सो लाइक होपफुली ज्यादा लोग देखेंगे, उसमें डाल दें प्रिकॉशन डाल दें कि अगर वो इतने से बढ़ जाए तो यार पुट मास्क ऑन दैट, सिंपल इज दैट, दैट्स व्हाट यू नीड। जिस तरह बारिश के लिए अम्ब्रेला चाहिए आपको बाहर निकलने के लिए, एंड इफ द पोल्यूशन लेवल इज दैट, पुट अ मास्क ऑन दैट, दैट्स ऑल यू नीड। फ्रस्ट्रेशन है, उसकी वजह यह है कि if only few of us know the issues endangering the lives and habitats and the agriculture sector, everything, and not many of us would come on the same terms, on the same platform. Yes, it's a frustration down there, because it's like it seems like we are the one who are more concerned and the rest of the public is not aware of it or not on the same platform on us. वो फिर वही बात आ जाती है behavioral change और एजुकेशन। आप उनको लोगों को नहीं बताते हो। अब एयर पोल्यूशन की जो अगर आपने बातें करनी है तो व्हाई नॉट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन द प्राइमरी स्कूल, व्हाई इन द नर्सरी। जैसे हमारे बच्चों को नर्सरी में वो आते हैं, वो येलो जैकेट्स पहना के ट्रैफिक पर ले जाते हैं बाहर, वहाँ बताते हैं कि बटन दबा के रोड को साइन ट्रैफिक पर रोकनी है, उसके बाद सड़क क्रॉस करनी है। सो वी प्रोग्राम द किड्स व्हेन दे आर 4 to 5 years old, बट यू कांट प्रोग्राम अ पर्सन व्हेन ही इज 20 years old। तो ये जो चीजें हैं ये तो आपने उनको उनके डालनी है उनके अंदर। सो building the queue or asking someone to say please can I have this, and then when they get it say thank you। so ये जो manners भी होते हैं ये भी बच्चों को आप छोटी एज में तो सिखा सकते हैं, but you don't expect people like me at the age of 50 you're gonna come and start teaching me manners। तो वो आने तो नहीं है, आपने को शायद आ ही जाए, लेकिन ये है कि बच्चों के कुछ चीजें हैं। अगर आप समझते हैं कि ये एनवायरनमेंट जो है
if it's so crucial for us, आप इस पे पॉलिसीज बनाएं, आप इसके ऊपर रेगुलेशन बनाएं, लेकिन आप इसको एजुकेशन के अंदर लेके आए, आप इसको ऐसे लेके आए जैसे देखिए आप दिन में जो मर्जी करें, आपको पता है खाना आपने 2 या 3 टाइम का खाना ही खाना है, उसके बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव। तो पैशन ले आए लोगों के अंदर, लोगों को पता लगे, लोगों को पता होगा, चलो दे मे नॉट बी एबल टू डू मच अबाउट इट, लेकिन शायद वो एनर्जी कंजर्वेशन कर लें, वो इनडायरेक्टली कोई एयर पोल्यूशन की तरफ जो है वो थोड़ा सा काम कर लें। अगर वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी का बच्चे के अब्बा की फैक्ट्री है, अब्बा को शायद ना पता होगा, बच्चे को ही आप अवेयरनेस करवा दो तो दे माइट वो टेल अपने अब्बा को कह देगा कि अब्बा जी यार आप फैक्ट्री क्या करवा रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ लाइक इनोवेशन और प्रोजेक्ट वगैरह के, उसमें कोई लाइक इज देयर अ स्पेसिफिक और लाइक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आपका ये एयर क्वालिटी के हवाले से जिसके बारे में आप बताना चाह रहे होंगे, एंड देन ऑफ कोर्स जो कहते हैं we will conclude after that, like आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, then we conclude, and like if there's anything that you would like to talk about, we'll discuss that and bring you on inshallah in some of the later episodes as well. तो अभी कोई existing project आपका है इस तरह का एयर क्वालिटी का? We have major project quite a few of them, but लेकिन वो इंडस्ट्रियल स्केल के, वो प्राइवेट सेक्टर में, so I wouldn't like to discuss कि उसमें फिर वो स्टेक होल्डर्स के नाम भी आएंगे, but हाँ, but they are very good. वो स्टैक और एम्बियंट को मिला के वी आर डूइंग सम मिक्स एंड मैच ऑपरेशंस which में wind speed, wind direction, it's plenty of stuff. I can tell you only that it's in Rawalpindi, it's happening in Rawalpindi, and it's going to be a first of its kind where we're going to mix and match ambient air quality monitors with the stack emission monitors to see उसमें फिर वो एयर डिस्पर्शन का मॉडल भी हम बनाएंगे कि जो स्टैक एमिशन निकले वहां से वो 300 मीटर के बाद डिस्पर्स हुए हैं या वो आगे चले गए हैं टुवर्ड्स जो पॉपुलेटेड एरिया, जो बिल्ट एरिया है। तो अच्छा, ये स्टैक एमिशंस और एम्बिएंट एयर का इसको जरा सा एलैबोरेट कर दें, जो मिक्स एंड मैच है, इसको जरा सा एलैबोरेट। स्टैक एमिशन तो बेसिकली जब आप कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या कोई चीज बर्न करते हैं या हीट प्रोड्यूस करते हैं या बॉयलर रूम्स होते हैं जैसे आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो धुआं जो चिमनी से निकलता हुआ आप देखते हैं, हाँ, उसको वो क्या करते हैं कि वो धुआं निकलने से पहले दरमियान में हम उसको कोई पाइप लगा के या नोजल लगा के, तो उसका जो स्मोक है उसको निकाल के उसके मिशन कहते हैं उसको जो मॉनिटरिंग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टैक एमिशन मॉनिटरिंग। तो स्टैक एमिशंस लग जाता है पता कि आपकी जो फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है वो कितनी पोल्यूशन कर रही है, नंबर 1, एंड सेकंड इट कैन आल्सो हेल्प यू फाइन ट्यून योर बॉयलर एज वेल। तो अगर वो ज्यादा एमिशन हो रहा है दैट मीन कि आपके जो इंजन है, आपका जनरेटर है, आपका बॉयलर है, दैट नीड फाइन ट्यूनिंग मीन कि बेसिकली वो दे विल यूज लेस फ्यूल एज वेल, सो इट्स अ फाइनेंशियल बेनिफिट टू देम एज वेल। दूसरा फिर ये होता है कि जब वो एमिशन निकले हैं तो देखना ये कि वो कितने फासले पे जाके डिस्पर्स हो गए हैं। लेट्स सपोज नॉर्मली वी से लाइक आफ्टर एवरी 300 to 400 फीट द एयर चेंजेस, तो वो साबित करना चाह रहे हैं कि वाकई जब हमारी फैक्ट्री से निकलते हैं तो 400 फुट के बाद हमारी बाउंड्री वॉल्स हैं, उसके बाद पॉपुलेटेड एरिया है, तो लेट्स पुट सम मॉनिटर लगाएं वॉल्स के साथ, और बाकी वो जो हम कहते हैं जो थ्योरी है जो कि 400 फुट के बाद वो डिस्पर्स भी हो रहे हैं या वाकई वो जा रहे हैं हमारे जो कि पॉपुलेटेड एरिया उनकी तरफ जा रहे हैं। तो अगर जा रहे हैं तो उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, अगर एमिशन कंट्रोल करेंगे तो इस पार्ट ऑफ देयर CSR, पार्ट ऑफ देयर QA, इसमें उनका जो पावर का जो डिपार्टमेंट वो भी शामिल है। सो दे आर मल्टीपल स्टेक होल्डर। एम्बियंट का तो सब पता ही है आपको कि जो हम नॉर्मल जो हवा में करते हैं, लेकिन एम्बियंट में भी वो हम एग्जैक्टली वही पैरामीटर यूज कर रहे हैं जो स्टैक में है, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर भी है, NO भी होगा, NO2 भी है, SO2 भी है, CO भी है और ओजोन भी है। तो देयर आर 6 पैरामीटर वी आर मेजरिंग बोथ इन द स्टैक और बोथ फॉर द एम्बिएंट एयर। ग्रेट, थैंक यू जुल्फिकार साहब। और जो कहते हैं आपने इश्यूज को भी हाईलाइट किया, हर्डल्स को भी हाईलाइट किया, और आपने ज़्यादा ऑफ कोर्स टेक्निकल नो हाउ भी सब लोगों को दी। And we're actually running out of time. Like at this point in time, there's such a vast topic कि इसमें तो घंटे पता नहीं कितने दिन गुजर जाएं बात करते हुए। So like I apologize that we have to like end at this point in time. Davar, any further questions or should we move towards okay, great. So please Zulfiqar साहब, आप भी जो कहते हैं हमारे ये the environmental का जो चैनल है और जो Facebook पे, YouTube पे, इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, and I'd like request my like our viewers to do the same as well, because we need that encouragement
to keep on going on, and inshallah we will keep on going on either way. But of course जितने ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि ये सारे important topics हैं और अब तो बहुत ज़्यादा existential topics बन चुके हैं ये. So thank you once again, Zulfiqar sir. Thank you. आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया. Thank you, Zulfiqar sir. It was a pleasure having you. Thank you very much. Pleasure. Thank you. Bye. Bye bye.